Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have another female entrepreneur with me, and she has a brand by the name of Hair Matters. So she's not just a female entrepreneur, but someone who can give us a little insight on hair as well. Hi Elise, how are you? Hi Hamna, I'm good, thank you. I'm so excited to have this conversation with you because I'm sure there'll be a lot to learn here. By the way, your hair is an example of how good your brand is. बस नजर ना लगे, thank you. Mashallah. It's really pretty, mashallah, and so healthy. Thank you. How did you develop this interest in hair? अच्छा, so the story isn't that interesting. I was always interested in hair care, ठीक अच्छा. है ना? So even growing up, my nani used to make this recipe हम सारी cousins के लिए, and I used to just mix and इस तरह से different combinations try करती रहती थी for different hair care, जिस तरह घर पे आप करते अच्छा, हो. with her? Yeah, with her. हाँ. So it was this like really casual सी activity, and I never really thought much about it. And when I business का जो start था वो एक बिल्कुल मतलब जैसा होता है by chance ही था. So my group of friends at Lums, we were all just thinking of new ideas and thinking कि अच्छा चलो कुछ start कर लेते हैं. And I was struggling with my studies already, so मैंने कहा क्या अभी business कैसे start कर सकते हैं? I didn't even think about it. So this was like I had 2 years left at Lums. And सब ने कुछ ना कुछ, my friend opened a chai dhaba, another friend started something else. So it was a group of 4 or 5 people, and we all thought अच्छा चलो. So they really convinced me, जैसा push नहीं करते कि लीज़ा कुछ करो. मैंने कहा अच्छा. So then the next morning I called them and I said अच्छा, I am really interested in hair oils. They were like तेल? They were literally actually like कि this was not what we meant by कुछ करो. हाँ, like तुम लम से बढ़ के तेल बेचना चाह रही हो basically. So I was like अच्छा, yeah, I get what you mean, but it's just something that I'm interested in. ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सी market research की and I realized कि जिस तरह I assumed कि everyone had family recipes that they would always were able to use, लेकिन एक्चुअली नहीं था इस तरह से एक्सेस हर किसी का. सो आई थॉट दैट आई डू हैव समथिंग, एक रेसिपी है दैट आई वांट टू मेक एक्सेसिबल फॉर मोर पीपल. तो बस इट स्टार्टेड इस तरह से, एक बिल्कुल बाय चांस ही चीज़ स्टार्ट हुई. एंड एट दैट टाइम आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि दिस वुड बिकम समथिंग दैट आई वुड बी डूइंग फुल टाइम एट वन पॉइंट. सो इट्स बिन एन इंटरेस्टिंग जर्नी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव बिन रियली लकी इस पूरे प्रोसेस में. एंड स्टार्ट करते हुए भी माशाल्लाह प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हुए, एंड आई एंजॉयड डूइंग इट माई सेल्फ. सो इट वॉज समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट. सो मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया. एंड आई केप्ट लर्निंग न्यू स्टफ एज आई स्टार्टेड बिकॉज just as I told you कि I was reading law actually. So मेरी कोई उस तरह से business में I had just taken a few courses marketing में और इस तरह से, but they really really helped me कि मैंने एक basic जिस तरह business model बनाते हैं, profit loss का करना, सारा कुछ एक basic सी चीज़ होती है. So I was able to do that all of my मतलब खुद से कर लिया. हाँ. So बस इस तरह से ही start हुआ. And then obviously my family, friends, they were all really supportive. I feel when you're starting a business, आपको जो network मिलता है ना, it's the most important thing. Because honestly, अब तो फिर भी I see बहुत blogs हैं, even this आपका जो podcast है, it really helps women, कि किस तरह से start करना है कुछ. But 2015 में उस तरह से नहीं था. So even little things कि अच्छा packaging कहाँ से करनी है, या ये cash on delivery shipments कैसे होती हैं, all of these small things I had absolutely no idea. So I'm really glad कि मेरे जो 5 दोस्त थे जो कुछ ना कुछ शुरू करते, we all basically pooled our resources. किसी को कोई information मिली तो we shared it with each other. किसी को कोई blogger का number मिलता था तो 5 के सारे PR packages जाते थे. So like वो एक नेटवर्क से बहुत हेल्प हुई. So ये था, स्टार्ट तो ऐसे ही था. So no business background basically, with help from here and there, and just self learning. ये बड़ी interesting चीज़ है. Like in my all the podcasts, most of the people who've come in and who have had businesses, they never had business backgrounds, and they were always pursuing something else, and then they ended up pursuing a certain business. अब कितना time हो गया Hair Matters को? So अब तो it's been 5.5 years. And that's a lot of time. 5 years is a milestone for a business, I think, है ना? I agree. For it to survive, and मुझे खुद भी काफ़ी shocking लगता है कि मैंने अभी तक चला लिया है. I've never done anything this consistently before. No, but what you're saying is true, because even when I went for my masters in entrepreneurship, उस पूरे साल के बाद यही
सीखा कि एंटरप्रेन्योरशिप आप सीखते नहीं हो, ये बस आप यू लर्न ऑन द जॉब. सही बात है. इट्स लाइक साथ साथ आपकी ट्रेनिंग होती है. हाँ बिल्कुल. सो कोई वो इस तरह की बुक नहीं है दैट कैन टेल यू कि एग्जैक्ट क्या आप स्टेप्स लोगे तो ये सक्सेसफुल होगा या क्या नहीं होगा. सो यू जस्ट कीप लर्निंग. आई थिंक बुक भी नहीं है. एंड आई थिंक दो लाइक सारे एंटरप्रेन्योर्स की अपनी ही जर्नी होती है. लाइक व्हाट works for one does not work for the other. Like, you know, सबका अपना pathway है. And I think the reason for that is that it truly stems from passion. Like, if your, you know, business is stemming from passion, then only you can define how it's done. बिल्कुल सही बात. And it was very interesting when you said कि you wanna sell hair oils and people are like तेल. But you know, at the end of the day, it doesn't matter what your business is about. If as long as you're passionate about it, because you could have an epic startup idea जिसका आपका कोई true passion नहीं है, but because वो एक epic idea I don't think it's going to be as successful because जो एक passionate बंदे की जो heart and soul लगती है एक business के अंदर, I think that's what makes it successful. And honestly, I feel like nothing is too big or too small, you know? You shouldn't think that this idea is really, really small. वो किसी के काम की चीज़ हो, if it's a good product, then, I mean, that's it. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि you need to start with a big idea, जो cool हो और बस, you know, that you can just show off. I mean, something that you like, you just go ahead and do it. I completely get it because when I launched my business, it was planners. So, planners? Who even uses that stuff? अभी भी लोग कहते हैं कि who even uses that, you know? Because it is a niche. It's not fashion mainstream. It's not beauty. It's not कपड़े. It's not, you know, it's not very conventional. हाँ, so वो उसमें लोगों को होता है कि people don't do that. People write stuff on their, you know, mobile, on their cell phones and stuff. But there are people who like to write, and then there are people who feel a difference in their lives because of it. So it's okay अगर वो छोटी सी नहीं definitely because जिस तरह होता है ना कि even when I went into hair care तो यही था कि इतने बड़े बड़े brands हैं. Who are you competing with? हाँ मतलब ये क्या मतलब L'Oreal है ये है. मैंने कहा of course ये सारा कुछ है, मैं उनके साथ compete कर ही नहीं रही हूँ. मेरा product is completely different. Yes, you're bringing something new to the table. It's new and I also wanted to focus on the fact कि हमारी अपनी पाकिस्तानी मतलब जैसा even South Indian जो एक recipes हैं, जैसा कुछ oils हैं, आंवला, रेठा, इस तरह की चीज़ें, these are very unique to our you know area, culture, ये सारा कुछ. तो we should have that in our hair. हर sort of even skin care और इस सब में incorporate करना चाहिए. So I'm not competing with them. This is maybe a niche, but you know उसमें फिर मज़ा आता है because आपके पास एक न्यू स्पेस होती है ना कि आप you grow in your own way. Yes, definitely. It's हाँ. लेकिन अब तो ग्लोबली इतना ट्रेंड डेवलप हुआ है टूवर्ड्स यू नो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें इस तरह से. सो आई डू फील कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है. पीपल वैल्यू सच प्रोडक्ट्स एंड जेन्युइनली आई फील लाइक इवन स्किन केयर में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर डूइंग सो वेल. New brands and initially even I used to be scared of trying them out. Lekin I'm really happy that we're coming up with such good products. So yeah, I think again another thing is that you know how your business is an e-commerce business. So that's also when you started 5 years ago. So that was just the start of people stepping into e-commerce. So what was that like? So I definitely that's something that I really wanted to talk about as well. बहुत ज़्यादा ना e-commerce पे था लोगों को they didn't have faith in e-commerce. ठीक है because it was not common. It wasn't common and also because बहुत ज़्यादा fraud होता था. People used to order one thing. जो memes भी होती हैं कि आप एक चीज़ order करते हो आता कुछ और है. So you know वो बहुत actually भी यही होता था. Even I ordered stuff online पाकिस्तानी website से it would be a completely different product और कोई return का exchange का एक वो होता ना customer feels safe कि मैंने करना है वो नहीं था. So इनिशियली तो लोगों को होता था कि नहीं आपके प्रोडक्ट स्टॉक कहाँ है देखें इनको हम जाके आपका स्टोर कहाँ है. बट ओवर टाइम पीपल हैव रियली डेवलप ट्रस्ट एंड फेथ एंड आई थिंक कि हर ब्रांड का ये बिकॉज इनिशियली मेरा बहुत ज़्यादा एम था if someone received like a broken bottle हो जाता है I would send them a replacement you know all of these small things that eventually builds trust with the brand. credibility बढ़ती है and obviously किसी ने order किया है तो उसको 2 दिन कोई फिर reply नहीं कर रहा तो customer भी अजीब सा मतलब you know
होते तो सारे everyone's human, obviously everyone gets scared कि मैंने ऑर्डर किया अब जवाब नहीं दे रहे, गायब हो गए. सो इस तरह की चीज़ें आई रियली मेड श्योर कि मेरे हेयर मैटर्स ना कस्टमर को सेटिस्फाई करे. सो आई डू थिंक कि वो एक बहुत ज़्यादा credibility और trust बढ़ा है over the years, but also generally e-commerce में भी बढ़ा है, and especially during corona people, it has really helped e-commerce. So जिस तरह हर because people situation would में not go out. हर situation में winners and losers होते हैं. Obviously बहुत businesses को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, but it's just that पाकिस्तान में e-commerce को एक बहुत boost मिला है because suddenly people wanted to just sit at home and get everything delivered to them. Yeah, because people were finally pushed from physical to digital. They जब no longer option ही नहीं had रही that ना, choice. तो बिल्कुल ये हुआ. And similarly जिस तरह पहले people did not want to pay online क्योंकि वो एक था कि कार्ड डालेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा. Even my mother to this date she says कार्ड का नंबर डालना है. तो वो एक था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. सो आई थिंक काफ़ी आगे तो बहुत स्कोप है फॉर ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान. Yeah, it's the future. Yeah, exactly. That's exciting. Yeah, I'm looking forward to how things will change. But Aliza, this was a lot of learning, right? So matlab it started with making an account on Instagram. So it was Facebook. Okay. In 2015, people were using Facebook more. Okay. Yeah. Which now we don't even. It's like a Facebook क्या था? अच्छा. So it started with the Facebook account. Then फिर Instagram start किया. It was actually in 2016 या 17 में मैंने Instagram पे मैंने कहा कि अच्छा अब ये भी बना लेते. In fact, मुझे Sunday Times ने कहा कि we're posting, so we need to tag you. I was like, oh अच्छा, let me just quickly make it. So इस तरह से था. But now तो मतलब पूरी website है, fully functional. People use the website for orders. Initially it used to be DM to order. उस तरह का, जिस तरह slowly आप develop करते हो चीज़ें. तो अब तो it's the website. बहुत learning होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता you learn. And like I'm sure you must know this as well कि even so e-commerce is not so simple in the sense that it's not just a shop. Like आपका जो physical आपके जो ये businesses थे, stores and stuff is on display, people come in, people buy, people go, right? अब जिन लोगों के stores में they need an online presence as well. Everybody needs an online presence. If people can't find you online, they don't. How will they know about you? And even if they do know about you, then they need to know more about you and they'll check online. No, definitely. मतलब even before going shopping, I check online कि अच्छा इनका क्या चीज़ें आई हुई हैं, stock में है नहीं है. Yeah, we all check, right? So the online presence has become such a big deal. But when it comes to having a shop online, it's not just putting up your products. It's creating content all the time for that page, right? So do you think that has changed over the last 5 years? Oh, it has changed for sure, and I'm sure you know this more than anyone कि content creation कितनी मुश्किल है, and to constantly keep the customer engaged and interested in your brand, it's so hard. But it's also the most fun part because बाकी सारा कुछ तो I've delegated. Obviously I have a team of people working and सारा कुछ, लेकिन this part, content creation and marketing, this I do myself. So मुझे इसका मज़ा भी आता है. I find it challenging as well because constantly you need to keep yourself relevant. ठीक है? And आपने चीज़ें भी ऐसी पोस्ट करनी है जिस तरह कुछ भी नया हो रहा है. अगर इंटरनेट का कल्चर इतना चेंज होता रहता है, there's constantly new jokes on the internet, new things happening, and you have to stay relevant one way or another. So and definitely पहले तो बिल्कुल Facebook पे one post used to be enough. ठीक है ना 2015 and it was always like product centric. अभी होता है अब तो आपने content डालना है, it doesn't even have to be about the product. Exactly. It's basically कि आप अपने brand की एक बना रहे, जैसा persona होता है brand का, you're building that. ठीक है ना? It's not कि आप बस constantly कि ये product है, इसके ये benefits हैं. No one even like वो आप बस ठीक है थोड़ा बहुत कर लो, like एक highlights में section डाल दो so that people can go check कि क्या products हैं. But उसके अलावा the whole brand and story बताना कि आपने start कैसे किया, all of that is really important. And it does take a lot of time and to that's very challenging, I must say. So basically now I feel like because of being online and then there's so many businesses being online and then you competing amongst several e-commerce business and you sort of competing in space, right? So लोगों की feeds है, so you're competing for that slot for people to see you.
and also appreciate what you posted. It's a lot more work now in that sense के because आप देखो ना कि इतनी सैचुरेशन है अब आपकी इंस्टाग्राम फीड पे स्टोरीज में इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है कि जस्ट टू किसी की अटेंशन आप ग्रास्प करो फॉर इवन लाइक 2 seconds, that's basically your job कि अच्छा कोई आपकी skip ना करे story. Yeah, and you have to that's why I feel like in this day and age now, like running an e-commerce business is so much work because you constantly have to create. It's no longer just creating a product, it's also creating content, you know, and keeping people involved and like growing that business and everything. So it's just so much extra work than before, and then that has happened for these you know बाकी आपके stores as well कि अब उनको भी एक online presence चाहिए and they have to create the content. डबल हो गया, स्टोर भी है और फिर ऑनलाइन भी है, so definitely नहीं but I also think it keeps I think it's also interesting because इसमें भी आप सीखते जाते हो, आप क्रिएटिविटी आप कर सकते हो ना. इसके अंदर पहले तो जिस तरह पहले बोरिंग कंटेंट होता था ऑनेस्टली कि बस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स प्राइसेस दैट्स इट, आपने लेना है लो, नहीं लेना, यू नो. बट अब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेज ऑफ जैसा होता था प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट होती है वो आप डिफरेंट तरीक़ों से अब आप करते हो. So इस तरह से but it's been an interesting journey and learning. It's been fun. तो अब तो मैं अपने पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि अपने जोक्स में ना पोस्ट्स बना के डाल दूँ, अब तो मैं वो भी डाल देती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, सही है, फिट है. People actually respond to humor the most. Yes. Humor and emotion. So if you अगर कुछ इस तरह से आप डालो कि you know mom related के ऑयल लगाना used to be my mom की याद आती है, इस तरह की चीज़ें, you know, so people actually relate to that the most. सबसे ज़्यादा engagement उसमें होती है. एंड ऑल्सो मज़े की बात यह बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यू कैन सडनली सी कि आपकी मार्केटिंग या जो भी पोस्ट हैं या स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल थी या नहीं, बिकॉज यू गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स. सो एज अपोज टू समथिंग आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ 3 महीने इन एडवांस और फिर देखो कि इसका रिजल्ट क्या था, लोगों से फीडबैक लो, दिस इज आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं. एवरीथिंग इज सो मच क्विकर, सो मच मोर इंस्टेंट एंड इनसाइट्स मिल जाती हैं. अगर आपकी नहीं चल रही मार्केटिंग कैंपेन तो you quickly know that this strategy is failing and so you can change it and quickly see कि अच्छा चलो ये नहीं, next time कुछ और करना है. So काफ़ी दोनों चीज़ों का I think benefits और disadvantages हैं, but So Hey Matters was entirely your brainchild, your thing. No, I think कि पूरी फैमिली का मेरा ना एक था. एक तो obviously support, my mom named Hey Matters, नाम उन्होंने दिया. बहुत अच्छा नाम है by the way. She would want credit for this, which is why she always says don't forget. So and the first recipe came from my nani and the rest were all me. ठीक है. So the ultimate hair treat oil which is a combination of 14 oils. It's my nani's recipe, but then I had to segment the market. जिस तरह different hair concerns के लिए different products हैं, repair के लिए है, hair loss के लिए है. So इस तरह से मैंने अपनी product range एक्सपैंड की है. जिस तरह एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए भी है, फिर किड्स के लिए है, मेन के लिए है. सो इस तरह से मैंने सेगमेंट किया है मार्केट को एंड पीपल हैव बिन रिस्पॉन्डिंग रियली रियली वेल. बट ओवर द कोर्स ऑफ 5 years मैंने बहुत आहिस्ता एक्सपैंड किया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट समथिंग दैट आई कांट हैंडल. उस तरह से मुझे नहीं था कि मैंने बस ओवरनाइट जिस तरह स्केल करना है फ्रॉम स्मॉल टू बिग बिजनेस. सबसे बड़ा इनफैक्ट यही होता है स्केलिंग में इशू, बिकॉज सम पीपल जस्ट वांट कि अच्छा ये बड़ा सा बड़ा हो जाए, मिलियनियर हो जाए हम इमीडिएटली, एंड उसमें आपका बिजनेस पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई थिंक दैट्स आई परफेक्टली लाइक 100% एग्री विद यू. आई थिंक स्केलेबिलिटी जो है वो स्लो आनी चाहिए. You should spend more time in the start just building a stronger foundation, and so that you can manage the growth. And biting उतना ही जितना you can chew. हाँ बिल्कुल सही बात है. अब मैं मैनेज ना कर, देखो द थिंग इज कि अगर कस्टमर को एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाए ना वो वापस नहीं आता. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. अगर आप मैं करना लग जाऊँ कि अच्छा बस मैंने अब अपनी सेल्स डबल करनी है या ट्रिपल करनी है एकदम, तो वो सारा कुछ आपका पहले उसके लिए स्ट्रक्चर या फाउंडेशन स्ट्रांग होनी ज़रूरी है. इट कांट जस्ट बी लाइक ओ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू यू नो सेल मोर, मुझे बस करना है इसको. बहुत ज़्यादा आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स actually fail when they scale up. Yes. So and like I think that's a mistake some people make. Yeah. So मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि you know start स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐड करो.
I honestly don't want to go into stuff that I am not, I don't have expertise on. Genuinely, मुझे उस तरह से है ही नहीं कि मैंने बस ये expand करना है. लोगों ने कहा कि shampoos बनाओ, outsource कर लो and just sell them under your name. I was like, नहीं, मेरे लिए ये है ही नहीं, this is not what the business is about. I believe in the product that I'm making, which is why, मैं oils में मुझे शौक है, मैं उसी में हूँ, maybe a few hair masks and all of that in the future. लेकिन मुझे ये नहीं है कि just because एक नाम बन गया तो अब मैं इसको नाम को ना बस खराब कर दूँ. हाँ. So makes sense. हाँ. But and also मतलब my plans are more along the lines of international जाने के, because I feel कि global market में नहीं है representation of Pakistani products that are actually good quality, up to the mark, certified. So ये सारी चीज़ें I feel कि मुझे इंशाल्लाह आगे करनी है. But COVID में international का काफ़ी सीन बुरा ही हुआ, because oils को भेजना बाहर, all of these things are quite hard. So I'm working on that. और मुझे यही है कि इंशाल्लाह there is some presence of Pakistani products in the global market. Yeah, I also want to do international, but it's a difficult step to take, and it takes some time. ये वही बात है ना कि the foundation has to be super strong for you to manage इतना बड़ा एक shift in the market. Yeah. So हाँ. So how big is your setup right now? So I have a team of 6 people, ठीक है, and I prefer, मेरी है bias कि I want to keep more females, ठीक है. Understandable. Yeah, I mean ठीक है, बहुत अरसा हमने दूसरा bias भी तो देखा है लाइफ में. तो क्या उसको कहते हैं, positive discrimination. So हाँ, so obviously I have 2 men जो logistically जिन्होंने बाजार जाना होता है and all of that, उसके लिए I have 2 males, but उसके अलावा even just stuff that is done online, जैसा even social media manager, I prefer to choose females, and they're doing really really well, and they're all from different economic backgrounds, and they have really learned and grown, and also उनको खुद जब financial independence मिली है ना, I've seen the change in them as well. And it's just really nice to see, because when I started earning शुरू में तो एक suddenly वो था ना कि I'm earning myself, and it a lot of empowerment comes from financial independence. Yes. So I'm glad that I've been able to give it to others. Yeah, a small I part. Completely understand that. It's not just about hiring someone to work for you, but also empowering them and having them grow and learn. और वो देख के आपको बहुत खुशी होती है कि आपने ये सब उनको सिखाया है. Someone is learning new things because of you. वो भी बहुत मतलब satisfying चीज़ एक होती है. तो it's very rewarding. Like बिल्कुल, definitely. Yeah. So so when you started 5 years ago, up to there are so many online female-led businesses as well, and I think we truly owe it to the internet कि उसकी वजह से women have been able to do businesses. वरना it was much more difficult, because if you have to put everything out there, then it's very difficult for a woman in our society कि वो जाके करे. अगर because now you can sit behind that screen, do it from home, it's made it a lot more easier. And you're one of the first तो मुझे नहीं पता, लेकिन very early adopters of this e-commerce female business. So how has your experience been as a female entrepreneur? What do you have to say about that? अच्छा, so interesting, मैंने अपना जब मैनचेस्टर से किया मास्टर्स, तो मैंने थीसिस भी इसी पे किया कि how social media and e-commerce has helped female entrepreneurship in Pakistan. ठीक है, so it was very relevant. The right thing, the right person. So मैंने काफ़ी इसमें research किया. There were so many factors जिनकी वजह से specifically a country like Pakistan has so much to has so much scope, because Pakistan में social factors हैं, religious factors हैं, ठीक है. Women are not उनकी mobility issues होते हैं. जैसा ठीक है ना, different economic backgrounds में suppose अगर कोई एक family जिसके पास एक bike है, ठीक है, उसमें the female does not know how to ride a bike. She is not allowed to even go out के खुद business करे, इस तरह से चीज़ें. So mobility का एक aspect था कि you don't actually need to step out of the house.
Similarly, social factors की इजाज़त नहीं मिलती. You have to actually interact with men when you step out of the house. Yeah. And obviously हर किसी का फ़र्क होता है, you know, restrictions होती हैं सारा कुछ. तो e-commerce and online businesses have given women in Pakistan इतना बड़ा access to new, you know, markets. इतने avenues खुल गए हैं आपके लिए. बहुत ज़्यादा, हाँ. So you're sitting behind your screen and you have मतलब the world to yourself. ठीक है. So उस तरह से आई थिंक पाकिस्तान को तो एक ही रिलीजियस फैक्टर था, फिर सोशल था, फिर यही के मोबिलिटी इश्यूज, एंड उसके अलावा यही था कि जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत काम किया जाता है सारा कुछ, बट जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से चीज़ आती है ना, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट. आई फील लाइक दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर you know male counterpart or male people, I'm not saying कि वो बुरे होते हैं, but I'm just saying कि आप उस तरह से freedom आपको नहीं मिलती ना. You're not allowed. आपने अगर हर चीज़ आपने sustain करने के लिए you have to ask the male head in the house, then you're not independent. You're not independent. So you're always depending on someone. If you're depending on someone for money, you're depending on them for everything. Yeah, because वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना. मतलब obviously I'm saying, not saying कि हर केस में they're bad या उससे बहुत सपोर्टिव होते हैं obviously, but you know एक फ़र्क इंडिपेंडेंस है when you have your own income. Yeah, and you have your own income, चाहे वो जिससे भी हो. You asked about my own experience of in this journey as a female, so I think कि दोनों pros and cons थे. ठीक है. Honestly ये नहीं था कि सारा ही बुरा था कि आप फीमेल हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता. इनफैक्ट कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा भी करते थे. हाँ. और बहुत तमीज़ से, इज्जत से, और जिस तरह बार्गेनिंग पावर हमारी ज़्यादा होती है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई फील लाइक कि बहुत फ़ायदे भी होते हैं. हमें हर दफ़ा इसको नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान में औरतों की तो कोई है ही नहीं. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होती भी है, इज्जत भी होती है. आपको बहुत लीवे दिया जाता है, आपको इज्जत एक्स्ट्रा दी जाती है. हाँ, ये ज़रूर था जब व्हेन आई स्टार्टेड, तो बिकॉज मैं काफ़ी छोटी भी थी एंड स्टूडेंट थी, तो वो होते थे अच्छा you know not taken seriously. So वो एक इशू था कि I used to, तो I would just prefer कि मैं कॉल कर दूं कि ये आप मेरी बात सुने ताकि पता ना चले मैं असल में कितनी छोटी हूँ. You can sound like a madam on the phone. So वो था. लेकिन you know वो भी ओवर टाइम जब आप बिल्ड कर लेते हो कि अच्छा हाँ आप किसी अपने वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गया सारा कुछ, तो फिर तो ऑब्वियसली वो. So I think इतना मुश्किल नहीं है फीमेल entrepreneurship in the country. बहुत अच्छे, maybe it's different in different fields. Depends on the field. Yeah, because honestly मैंने वैसे तो law किया था, and when as a lawyer जब मैं शुरू में गई कोर्ट्स में, तो I was so scared कि यहाँ तो आदमी आपको they just constantly stare at you, and I was thinking कि ये तो अच्छे खासे पढ़े लॉ करके यहाँ पहुँचे हैं, तो वो मुझे environment बिल्कुल भी comfortable for women नहीं लगा. But obviously more power to those women who do actually pursue law in this case, and they manage to go through all of this. But I think कि women should definitely start some. अब तो I feel like COVID में तो a lot of new female entrepreneurs you know started something. Yeah. एंड लाइक वही इंटरनेट की वजह से आपके पास कोई भी टैलेंट और स्किल है ना, आपने उसको एक ब्रांड बना देना है, एंड देन यू नो द वर्ल्ड इज अगेन योर ऑयस्टर. बट इसका ये भी है ना कि इसकी भी दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज सम पीपल डू यूज़ द इंटरनेट जस्ट टू यू नो डिसीव पीपल. बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी है अब, बिकॉज जितना ज़्यादा हो गया उतना ही ज़्यादा फ्रॉड एंड सारा कुछ होता है. सो आई होप कि पीपल रिमेंबर कि हमें एक बिजनेस एथिक होता है, एक वर्क एथिक होता है, वो आई होप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो पाकिस्तान में. हाँ, आई गेस टाइम लगता ही है. इट टेक्स एवरी कंट्री टाइम टू एक्चुअली यू नो डेवलप. एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. ओके, सो हेयर मैटर्स इज वन ऑफ द फर्स्ट क्या कहते हैं हेयर ऑयल ब्रांड्स दैट आई केम अक्रॉस ऑनलाइन पर्सनली. आई डोंट नो इफ देयर वर मेनी अदर्स एट द टाइम, बट देयर इज अ लॉट many right now, पता नहीं बहुत ज़्यादा है, right? Even I can't keep up with the competition now. Yeah, so there's a lot of competition there. Do you think that has affected hair matters? Yes, obviously देखो because इतना वही जो बात हो रही थी कि कंटेंट की, और आप you're constantly fighting for attention ना. So उस तरह से yes I do feel कि पहले जब एक खाली जगह थी, and now you know like एक बैटल फील्ड है वो, कि उसमें आप constantly कंज्यूमर की उसके लिए लड़ रहे हो. But I think
बिकॉज मुझे 5 साल हो गए मैं, सो आई हैव दिस एज, जैसा एक लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स है ना, सो वो एक है कि एक पीपल नो के क्रेडिबल ब्रांड है. सो आई गेस टाइम की वजह से, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ यूज द प्रोडक्ट एंड दे कम बैक, या सो वो एक उस तरह से ये नहीं है कि मतलब मुझे आई नीड टू वरी अबाउट ऑर्डर्स एवरी डे. सो येस, मुझे ग्रोथ में होता है कि बिकॉज आई नीड टू फाइंड न्यू मार्केट्स एंड न्यू कस्टमर्स, उसमें ज़रा सा होता है. बट उसके अलावा आई थिंक के ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, आई थिंक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. और दूसरा ये कि वही जिसने टाइम ज़्यादा लगा लिया है will obviously always have more credibility. But also जिस तरह एक ज़रा सा जो मुझे इशू था that I wanted to bring up कि a lot of brands now just say कि organic products, ठीक है, कि we are selling organic और हर जगह बस ये word जो है your face है, ठीक है, फिर बस कुछ ना भी हो तो organic. Anyway, so उस तरह से I've never used the word organic for my products because there's a very fine line between natural and organic products, ठीक है. So my products are chemical free, they have no preservatives, nothing of the sort that is harmful. But organic और natural में ये फ़र्क होता है कि the process of आपका हर ingredient को जो आप निकालते हो ना oil निकालने का, उसका फ़र्क process होता है when it's organic, ठीक है. So that is not the case for my products. ये सारे natural ही होते हैं, and I make it a point that when even customers say कि oh organic, I tell them कि no, please don't tell people कि ये organic है, it's a natural product, it is ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं which actually customer को होता है कि अच्छा हाँ ठीक है, they're not trying to oversell. जिस तरह another thing that I would like to talk about कि when people ask me about so there's this specific product for hair loss, ठीक है, so people message कि इससे मेरी completely hair loss ख़त्म हो जाएगी. तो even before selling the product I tell them no, listen, 50 to 100 strands of hair, losing them in a day is natural and it's actually a healthy amount, ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं मेरा कुछ product कर सकता. It's not magic. And so please keep this in mind कि this will only do as much as it can. I don't want to oversell. I don't want कि सारों की expectations इतनी ऊंची हो जाएं कि इसको मैं आज लगाऊंगी तो कल ख़त्म हेयर लॉस और इस तरह से. एक हेल्दी अमाउंट और उसमें जो आपका एक बॉडी का भी सिस्टम है उसके हिसाब से ही ये प्रोडक्ट काम करेगा. एंड बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, जिस तरह आपकी डाइट मैटर करती है, स्ट्रेस मैटर करता है, आप किस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हो. ऑयल इज एन एक्सटर्नल थिंग जिससे हाँ ठीक है नरिशमेंट होती है, आपकी रूट स्ट्रांग होती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ता है. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यू आर गोइंग थ्रू रियली स्ट्रेसफुल पीरियड इन टाइम, इस तरह की चीज़ें, इवन कोविड के बाद लोगों को इमेंस हेयर लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द वीकनेस आपकी बॉडी में जो क्रिएट होती है. सो आपको ये सारी चीज़ें इन योर माइंड रखनी है. सो आई डू टॉक टू देम. सो मेरे इस इंस्टाग्राम पे DMs में ना there's one-on-one consultation for the customers. So they send a message, they talk about, I ask them hair issues, primary hair concerns, because when you ask a woman about her hair she will list 7 problems. Frizziness भी है और hair fall भी, everything basically, हर problem आपके बालों को है. So I say अच्छा ठीक है, so what are you trying to fix right now? So then we talk to them about their specific problems and then we suggest a certain product for them. And उससे काफ़ी लोगों की हेल्प होती है because they know exactly कि अच्छा चलो हम इस चीज़ के लिए ले रहे हैं, ये इस चीज़ को हेल्प करेगा. So so I don't oversell or I don't promise. मैं कोई इस तरह की नहीं करती which I can't fulfill. And इस सारी चीज़ों से ही आहिस्ता आहिस्ता I think brand का trust and credibility बढ़ती है. So you have a wide range of hair care products, ठीक है. So how did you said you made the recipes. How did you do that? Like, how did you learn about hair and then so it was always something I was interested in. ठीक है. So I used to always try different ये जो DIY recipes होती हैं. You said with your nani. Yeah, with my nani and also myself कि अच्छा ये, and also because अब internet पे इतना ज़्यादा होता है कि coconut oil, castor oil, ये सारी चीज़ें. So I was always reading up about them and trying them. And then so then I made different recipes, formulas for जैसा होता है ना कि अच्छा हेयर लॉस के लिए क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं इस तरह से. एंड देन आई ट्राइड देम. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर सब्जेक्टेड टू टॉर्चर. हर किसी they were your guinea pigs. Yeah, all of them बेचारे. आई यूज्ड टू गिव देम स्मॉल सैम्पल साइजेस के ट्राई करो. फिर मैं उनको एक वो फीडबैक की ना एक वो देती थी कि अच्छा स्मेल कैसी थी, वॉज इट ईजी टू वॉश ऑफ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि मुझे फीडबैक दो मिलेगा तो देन आई इंट्रोड्यूस दिस इन द मार्केट. सो बेचारे मेरे दोस्तों ने काफ़ी ये चीज़ें की हैं. They have been really helpful. अच्छा. And हाँ, so इस तरह से I slowly gradually develop products. जैसा फिर
आदमियों का which I introduced, so there's obviously no difference आदमी और औरतों के सर में बालों में, ठीक है, सर में शायद हो so लेकिन यही था because men don't want to buy a product that looks like a feminine product, ठीक है, also men want to somehow like hide and they don't want to know tell anyone, they don't want to tell anyone कि हम कोई self care product use करते हैं. तो the hair oil for men, मैंने एक लिस्ट ऑफ बनाई ना कि अच्छा आदमियों के क्या मेन इश्यूज हैं, ठीक है, रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, हेयर लॉस होता है, इस तरह की, सो सर्टन थिंग्स दैट आर मोर रेलेवेंट फॉर मैन, ठीक है. एंड फिर आई उसकी भी मैंने उस तरह से रेसिपी निकाली which oils are most helpful in these issues, and I packaged it in a way that it's more appealing to men, and it's a really really big market because men are actually interested, they're worried about their hair, so काफ़ी ज़्यादा आदमी, the product has been a a success. So they did respond. They did respond. Okay, that's good. I think it has helped because वो घर पे बैठे हुए छुप के ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं ना, no one can know कि they ordered self care as opposed to going to a shop. और I think it should be normalized a bit more. Skin and hair care for men. ये stereotypes से अगर हम निकल आए तो क्या ही बात हो. सही बात है. No, but that's really good to know that you had a good response for men as well. Because I think when you're making a product आपको ये थोड़ा सा होता है ना कि यार मैं इसमें साइड एफर्ट एनर्जी डालूं और फिर it doesn't even result in anything, so that's really good. So you never pursued anything in law? No, even though my whole family is a family of lawyers, and you're an outlier. Actually they always knew that I was interested in business as a ये बहुत ही लेम स्टोरी है, लेकिन इवन एज अ किड ना आई ऑलवेज यूज्ड टू सेल समथिंग, कोई गेस्ट आ रहे होते थे तो आई यूज्ड टू सेल देम रैंडम स्टफ एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी लाइक, ओ माय गॉड दिस इज सो एम्बैरेसिंग. So you had a knack. They always knew कि she is going to go into business one way or another. I just couldn't study business because I was really bad at math. So at LUMS I shifted towards law because it was sort of an easy escape from math. And everybody in the family and everyone was happy. सब खुश थे कि अच्छा चलो another lawyer. No, but I also think that it really helped me in my business because आपको जब आप सेटअप कर रहे हो तो बहुत legal requirements भी होती हैं, and वैसे वो बड़ी intimidating sound करती हैं ना कि ये jargon ही क्या है. To an average person like myself, I go through that. I'm just like too overwhelming. वो जानबूझ के complicate भी करते हैं ना, even contracts and agreements on all of these things just to scare the other person. ये normal चीज़ें नहीं है. So I think उसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई because all of that I had read all of that, and I was able to manage that myself. And also I feel like एक professional degree law sort of helps you in every field. You need it everywhere. तो उस तरह से I thought it was a good decision to it's actually being a lawyer means that you're just a lot more aware. क्योंकि at the end of the day like legal चीज़ हर चीज़ में आती है once you grow up, like जिधर भी घुसाना चाहो it's a huge part of your life. So for an average Joe it's a lot more difficult, but for a lawyer like it helped. It helped. It's just going to help everywhere. जो भी पढ़ो या जिस तरह भी जो भी आपकी जर्नी हो, I feel like आपका in the end वो चीज़ें help ही करती हैं one way or another. Maybe you don't realize at that point. But somewhere down the line it's teaching you something and it's playing its role in your life. Definitely right now. So is there anything else you want to say, Alize? Any hair care myths? I mean, I spoke about one which is hair loss. People think it has to completely stop and all of that. उसके अलावा myths तो नहीं, but I would just नहीं, I don't nothing that comes to my mind right now. मुझे ना I remember I worked with Hair Matters a really long time ago. बहुत पहले. I think you were studying at that time because I asked Aliha and Sana to ask you can I send you products. बहुत तब you were at LMDC. I was at LMDC and that was a really long time ago when Hair Matters sent me the oil. Are you saying I should send you more stuff now? Sure. I would love more oil. I get the hint, Hamna. No, but like वो बहुत पुरानी बात है. मैंने काम किया था Hair Matters के साथ, and that's why I remember कि you were that was the first time कि कोई hair oil brand इस तरह था और आया था और मैंने देखा था. And again फिर अब इतने ज़्यादा हैं, इतनी saturation.
बट मैं पर्सनली लाइक एज अ ब्लॉगर, मुझे बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ हेयर और स्किन केयर के लिए भेजते हैं. मेरे लिए बस वो एक, और वही ऑर्गेनिक हर किसी ने लिखा हुआ. मेरे लिए जो एक कंसर्न होता है ना उसमें वो यही होता है कि लाइक यू नो इट्स माई हेयर एंड पीपल आर सेंडिंग मी स्टफ एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो ब्रांड और बिजनेस का होता है कि यू नो आई एम गोइंग टू प्रमोट इट और वट एवर. But I stopped actually working a lot with hair and skincare brands because मुझे होता था कि मैं क्यों अपने ऊपर हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करके you know लोगों को बताऊँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है. And plus like मुझे होता था यार people are sending me like 5 products, which one is working? नहीं पता चलता. Yeah, so when it came to like you know hair oil and skincare, like बस मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया हुआ है and I've just sort of pretty much always stuck to like 2-3 or which works for you. Yeah, and I'm like इतने ज़्यादा हो गए, how do I choose? No, it's also very risky. कुछ आपको भेजे as a PR और आपको बस यूज करना हो तो नहीं, that's definitely मतलब which is why मेरा तो also one thing कि I've in my 5.5 years I haven't paid for any sort of promotion. I haven't. So which I actually take great pride in because it's really easy to you know pay an influencer and get a review. I always ask them कि देखें we have this business, if you're interested I'll send you a PR तो मैं भेजती हूँ, ठीक है. I send them products and I say okay you take your time, use them 3 weeks 4 weeks and if you like it, if you then want to share it with your followers then you share it, ठीक है. And honestly I think because I give this एक space भी देती हूँ influencer की, मतलब it's उनका डिस्क्रेशन है ना कि पसंद आए ना आए. फेक रिव्यूज का कोई फायदा नहीं होता. यू डोंट नीड देम. हाँ एग्जैक्टली. सो एज अपोज टू एक जेन्युइन रिव्यू मिल जाए एंड 10 फेक मिल रहे हो ना तो उस जेन्युइन का ही फायदा होता है. सही है. सो मुझे आई सेंड देम टू ब्लॉगर्स एंड माशाल्लाह आई वुड से कि 95% पीपल पोस्ट देमसेल्व्स, दे लाइक इट. ठीक है, महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं एंड या कभी जिस तरह होते हैं ना 3 महीने बाद जैसे ओ आई हैव बीन यूजिंग दिस, बिकॉज ऑब्वियसली यार उनके लिए भी तो एक मुश्किल जॉब है ना. कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट्स को वो उनको PR में आते हैं, उन्होंने पोस्ट करना है. सो आई वॉन्ट इट टू बी मोर जेन्युइन. सो आई डोंट फोर्स देम कि अच्छा ये टाइम लाइन है आपकी, प्लीज करें बस ठीक है, टेक योर टाइम इफ यू लाइक द प्रोडक्ट एंड 95% दे डू लाइक द प्रोडक्ट. सो और जिनका कभी होता है कि नहीं डिडंट सूट देम, दैट इज ऑल्सो नेचुरल. ठीक है, किसी के बालों को नहीं सूट किया तो आई मीन दैट्स ऑल्सो रियलिटी. एक चीज़ अभी मेरे जहन में क्लिक की है कि उस टाइम पे आई थिंक हेयर मैटर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स जिनके साथ मैंने PR और ये काम किया था. नॉट लाइक फर्स्ट बट लाइक बहुत शुरू का टाइम था वो मेरे लिए भी. एंड यू नो मी वर्किंग विद ब्रांड्स एंड स्टफ. It wasn't influencer marketing wasn't that common. How did you learn about it? So honestly मैं तो addicted हो गई हूँ Instagram से. I'm always on Instagram and मैं खुद इतनी shopping अब कर लेती हूँ because bloggers are constantly, influencers are constantly posting about products ना. तो it started इसी तरह से, मतलब friends of friends के, because like I knew you through friends and इस तरह से I got your address and इस तरह से and people that I used to follow, मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको भेजा. So it was a learning process, मतलब आहिस्ता आहिस्ता. But I think अब तो honestly market saturate हो गई है. It doesn't make any difference अगर influencer post करे. In fact smaller influencers जिनकी engagement ज़्यादा होती है, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है because उनका honestly उनके followers उनको सुन रहे होते हैं ना. So अब the trend has changed. पहले जैसा I learned about Facebook marketing, फिर वो trend die down कर गया. अब मैंने Instagram का सीखा. It keeps changing. You have to sort of keep up and तो एक तो अभी तो everyone's like TikTok में इतना स्कोप है for marketing. मैंने कहा that's you know मेरी भी कोई limitations है, मैं क्या क्या सीखूं. हाँ that's true. But internationally तो TikTok is doing really well for you know for brands. But अभी वो I don't think I think maybe in a few years Pakistan उधर पहुंचेगा. अभी तो ban कर रहे हैं. We're not there yet. And I am not there either because I haven't learned about it yet. तो influencer marketing was an interesting journey. I do feel कि a lot there बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. उनका वर्क एथिक आई वुड लाइक टू से कि अच्छा है, ठीक है. इफ आई सेंड समथिंग टू देम दे डू मेक इट अ पॉइंट कि अच्छा हाँ थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस. मोस्ट ऑफ देम डू एंड आई थिंक इट्स रियली रियली नाइस बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में आप किसी को कुछ भेजो वो आगे से लेके इस्तेमाल करके फिर यू नो डजंट इवन लुक बैक, ये भी हो सकता है. सो अच्छा था. बट आई थिंक experience has been good so far. So far it has been
Yeah, it has been good. लेकिन अब वही मैं कह रही हूँ ना कि it's saturated. So but I think it also depends on the bloggers now, because just I don't know how much you watch my stories or whatever. I do, huh? But I don't take a lot of PR, Huh. and that is the reason for it, because if I'm going to be talking about so many products all the time, people will stop listening. So when I really like a brand or business, तो मैं उनसे लेती हूँ और उनका करती हूँ, ताकि because if I'm all Because the it time reflects on posting, your credibility as well, na? if I'm all the time posting, then people will actually just be skipping my stories. So it's, and honestly, like if I'm working with small businesses, then I genuinely want कि मुझसे कोई फायदा हो, you know, उस business को. अगर नहीं फायदा होता, then I just feel really bad. Yeah. Because just for the sake of a story आप post कर रहे हो और बस उनको एक वो duty type आप कर रहे हो ना, तो उसका नहीं फायदा होता. So but yeah, I guess that's about it from me. Thank you so much, Alize. Thank you, Hamna, for having me. And you're like the first person I'm meeting after COVID. So 15 days ke baad I've spoken to someone and I've enjoyed it thoroughly. Yeah, like I got in touch with Alize and she's like, you know, I have coronavirus. Yeah. And then like, shukr hai, us waqt khatam ho gaya tha, and then you got yourself tested, and yeah, I'm glad you were here, because you're not in Islamabad all the time. I'm based as in well. Lahore, yes. Yeah, so I've been very lucky. No, I'm glad ये इतना अच्छा हमारा catch up भी हो गया, and I was in the city और सारा कुछ. Yeah. And we got to know each other on another level, because we have a lot of common friends, but we've never spoken to each other properly. So thank you, Lisa. Thank you for watching, for coming. And you guys, thank you for watching this episode of Happy Chirp. I had a really good time with Lisa. I hope you guys learned something from it too. Allah Hafiz. Bye.